जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, इसमें वॉल्यूम 5 ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर पे हम आ चुके हुए थे, जुडिशल बिजनेस। क्योंकि अब ये है जी जुडिशल ऑल जुडिशल मैटर्स, ये तो मैंने पढ़ लिया था 11 बजे से पहले जो हमने लेके आना है वो भी यहाँ पे स्पेसिफाइड है। फिर उसके बाद जो डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास आपने लेके जाना है, अगर आप लेट हो गए हैं, कोई अर्जेंसी मैटर है, तो आपने वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करनी कि सर मैं 11 बजे से लेट हो गया हूँ, आप काइंडली इसको फिक्स करा दें सेम डे या अगले डे के लिए। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात जिससे मैं समझता हूँ कि मेरे लिए पर्सनली हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वाई इट बिकेम सो इम्पॉर्टेंट वाज कि आईसीएस की जो सर्टिफाइड कॉपी है जो जजमेंट की, मुझे हमेशा से ये सुना था कि हमारे सीनियर से कि जी आईसीए की जो कॉपी, जो नीचे जो सिंगल बेंच का ऑर्डर होता है उसकी सर्टिफाइड कॉपी साथ में नहीं लगती, क्योंकि रिट पिटिशन की कॉपी उसके साथ फाइल, रिट पिटिशन की जो नीचे सिंगल बेंच की फ़ाइल होती है वो भी आईसीए के साथ पुटअप करनी होती है बिफोर द डीबी। तो मैं उसका रेफरेंस मुझे कोई नहीं देता था, तो यहाँ से मुझे रेफरेंस पता चला कि लिखा हुआ है अटैचिंग, अगर आप देखें इसका पेज 767, आईसीए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट रिक्वायरमेंट, attaching of certified copy of order of judgment is not required under chapter 1 rule 4 of High Court Lahore rules and order for filing ICA. Certified copies of evidence and other annexures, exhibit, etc. Trial court having not been filed with the revision office returned the petition for rectifying limitations for e-filing of the revision petition is refiled and after a lapse of 228 days effect where the filing is not done. तो ये भी यहाँ पे लिखा है, कॉन्डिलेशन ऑफ डिले का भी लिखा हुआ, कॉन्डिलेशन ऑफ डिले क्या होता है, कॉन्डिलेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन केस क्लॉज भी हैं। omission to file a certified copy of lower court's order with memo of appeal, omission is not fatal, अगर आप नहीं भी वो लगा पा रहे तो आपने साथ में डिस्पेंसेशन लगा के, दैट इज़ नॉट फेटल। रिविजन पटिशन, री फाइलिंग, केस लॉ, हम थोड़े सा और आगे जाते हैं तो अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, मेंटेनेबिलिटी, सिंगल बेंच ऑफ हाई कोर्ट, इसमें काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये बुक की थोड़ा सा फ्लॉ बैक है कि बहुत राइटिंग स्टाइल बहुत छोटा, फॉर्मेटिंग जो है वो छोटी है, तो इसी बड़ी भी हो सकती थी। रूल्स ऑफ ऑब्जेक्शन बाय हाई कोर्ट ऑफिस, नॉन रिमूवल ऑफ within specified time, consequence, procedure to be followed by deputy registrar judicial of high court in such case, preliminary objection as to, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं रीट्रेट करूँ कि ये हाई कोर्ट के अपने स्टाफ और जजेस के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं ऑफ द हाई कोर्ट कि उन्होंने उन हालात में किस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को रिएक्ट करना है और उन्होंने किस तरह उनको सॉर्ट आउट करना है। तो आपको उनको मुंह से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये वो आपको मुंह से एक चीज़ का बताएं, उससे बेहतर आपने रूल्स में पढ़ा हो, तब जाके उनको उसी तरीके से कन्फ्रंट कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन एक्ट टू एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन, अच्छा अब मैं ये पढ़ लूँगा थोड़ा सा पार्ट। अपील, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ऑब्जेक्शन बाय हाई कोर्ट ऑफिस, नॉन रिमूवल ऑफ विद इन स्पेसिफाइड टाइम, कॉन्सिक्वेंस, preliminary objection as to the expiry of limitation period for filing appeal, failure of the appellant to remove the office objection within the specified time, respondent raised a preliminary objection that where the appeal was returned by the office of high court for removing the objections within the specified time and meanwhile prescribed period for filing appeal lapsed, then such delay would render the appeal time barred unless the delay time barred unless the delay was explained through an application for condonation of delay under Section 5 of the Limitations Act 1908, and the delay was condoned by the court. Contention of the appellant that the appellant was not barred by the time as the same was originally filed within the time and the date of relevant for determining whether the appeal was within the time or not would be the date when the appeal was originally filed, and mere delay in moving the office objection was not appropriate. Note, for delegation of powers to additional registrar, see notification number 222, Gazette number 1/5, dated 25th October 1989. अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज भी यहाँ पे डिस्कस्ड है, apart with the presentation of petition for revision under section 435 and 439 of the CRPC, revision against petition, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया इस तरीके से कि हम नॉर्मली सीपीसी वगैरह में उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं हुई होती, ऑब्वियसली वो एक ओवरऑल ऑब्जेक्ट है। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर सीपीसी, लीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसीज्ड parties and appealed by person who were not parties to the decree or order. Whenever a party to a decree or order which is applicable to the High Court, which is appealable to the High Court, desires to appeal therefrom and to make as a respondent to his appeal the legal representative of a person who, having been a party to such decree or order, has died after the date of such decree or order, or who, if alive, would be a necessary party as a respondent to such appeal,
and whose legal representative has not as much as been made party to the decree or order as to subsequent proceedings thereunder or thereon, the party so desiring to appeal may present to the High Court for admission of a memorandum of appeal within the name of such legal representative mentioned therein, as such as that of a respondent, if that time when he appeal for admission, he along with such memorandum of appeal presents an application for leave to make such legal representative as such as a party as a respondent to his appeal, then except as they hereinafter provided an affidavit standing such facts as may be necessary in support of his application, provided always that judge of a high court may by an order under his hand allow his discretion a reasonable time in that behalf for the representation of such affidavit if it appears to him that the application could not be exercised with due diligence, have procured such affidavit in time for representation along with the memorandum of appeal. कि अगर कोई बंदा खुद मौजूद नहीं है तो अपने एफिडेविट किसी को साइन कर सकता है. ऑब्वियसली ये चीज़ यहाँ से ली गई है. PLD 1962 लाहौर भी है. General rules as to suits and appeals. Every application under order 12 rule 3 1 and 11 of CPC by a person claiming to be a legal representative or deceased or plaintiff or appellant to enter his name or record in place of deceased party, मेकिंग एंड फाइलिंग ऑफ एफिडेविट्स इन हाई कोर्ट. अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट में एफिडेविट्स किस तरह फाइल करते हैं. इसमें हम लोग हमें कन्फ्यूजन होती है. ये हम देख लेते हैं. पेज नंबर 779 है आपके रेफरेंस के लिए. एफिडेविट्स इंटेंडेड टू बी प्रेजेंटेड इन द हाई कोर्ट इन सपोर्ट ऑफ एनी मेमोरेंडम ऑफ अपील, cross objection on appeal, application for review or petition for revision, or any other application or petition under the Code of Civil Procedure shall be drawn up and attested in the manner prescribed for the civil courts of the Punjab by the rules made by the High Court in that behalf, and be declared before some court or magistrate or office appointed to administer the oath of deponent. When a memorandum of appeal, cross objection on appeal, application for appeal under the Code of Civil Procedure on proceeding in which section 141 code applies contains an assertion of any fact or facts contrary to the outside the record or not supported by evidence already on the record, such assertion shall be supported by one or more affidavits. तो इस तरह की बात है तो हमने एफिडेविट्स एक दो करने. सच एफिडेविट शैल ऑर्डिनरी बी प्रेजेंटेड विद मेमोरेंडम ऑफ अपील, क्रॉस ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन और पिटिशन. एनी ग्राउंड कंटेन्ड in any such memorandum of appeal, cross objection application or petition containing an assertion of facts not supported by affidavit may on hearing thereof be ordered by the judge or bench to be struck out or amended summarily unless leave be granted to present an affidavit in support thereof. Facts asserted by a party showing cause against appeal applications or petitions supported by affidavit shall likewise be supported by affidavit, whether the facts asserted be in contradiction of facts asserted in support of the same. Evidence given in support of any of the following or similar application should be given by affidavit unless otherwise ordered. An application to admit an appeal or application which prima facie barred by time, application to add parties or to substitute representative of parties, ये सारी जो हैं ये एफिडेविट के थ्रू सपोर्ट करनी है हमने हाई कोर्ट में सबमिट कराते हो. जब ये सारी चीज़ें देनी है हमने